for building mobile and web applications. During Flutter Nest, we may also showcase successful case studies of apps developed with Flutter and stay updated on the latest Flutter-related developments. This event provides useful information about present and possible future of Flutter. Why are we conducting Flutter Nest and since when? Since August 2023. Knowledge sharing. Flutter Nest provide a dedicated space for sharing knowledge and insights about Flutter, enabling attendees to learn from one another. Staying informed. Flutter Nest keep participants informed about the latest updates, best practices, and emerging trends in the Flutter ecosystem. Inspiration. The showcase of successful apps in Flutter during these events can inspire attendees to explore the framework's potential in their own projects. Updates. They serve as a platform for sharing and discussing the most recent developments and updates related to Flutter. Okay, so today our objectives will be around gaming in Flutter, why Flutter for games, Flutter Flame, and something extra. If after that we have some interaction session as well. Not after that, in between our session, we will interact with peoples as well. So let's get started. So it is a tech cover of the week. It is a new initiative taken by Gaurav and our team. So we have chosen the new AI disruption tool, which is Devin or Devil for software engineers. It is an article which was written in the Hindu news paper, so that's why we chosen it. So introducing Devin by Cognition, the world's first fully autonomous AI software engineer with an unprecedented 13.86 issue resolution rate. It's rewriting the tech rules, but as it performs human counterparts, question arise about its impact on jobs. Cognition tried given Devin real jobs on Upwork, and it could do those too. ओवरऑल जो इसका कहने का मतलब है वो ये है कि जो नया एआई सॉफ्टवेयर आया है ये फुल्ली इसको हम बोल सकते हैं एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर विच इज ड्रिवन बाय एआई. इसका जो सक्सेस रेशियो रहता है वो 13.86 रहता है सॉल्व करने का, जो भी दिया जाता है यूजर के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने को. इसके पहले चैट जीपीटी भी था, उसका सक्सेस रेशियो जो सॉल्व करने का था वो 4 पॉइंट समथिंग के बीच में लाई करता था, बट इसका जो है 13.86 है. बट हियर द क्वेश्चन राइज कि क्या ये ह्यूमन को रिप्लेस करेगा, क्या कर सकता है ये डेविन जो नया एआई टूल्स आया है. तो इसके लिए आई वुड लाइक टू आस्क सम ऑफ आवर लीड्स कि इनके इस बारे में उनके क्या अप्रोच है या वो क्या रखते हैं अपने माइंड में कि ये कर सकता है नहीं कर सकता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क अंकित सर कि डेविन के बारे में वो क्या सोचते हैं. सो अंकित सर, प्लीज शेयर योर थॉट्स अबाउट डेविन. यार वैसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं एआई के इंडस्ट्री में. इट इज़ वन ऑफ देम विच हैज़ ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट. और अगर देखा जाए तो इससे आने वाले टाइम में जॉब क्रिएशन और जॉब मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इसका डेमो हुआ है वो काफ़ी इनोवेटिव तरीके से हुआ है. अगर आपने देखा हो जो प्रेजेंटेशन दी गई थी उसमें ये था कि फर्स्ट इट विल नॉट डायरेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम, इट विल ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्टेप्स एंड देन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू वन बाय वन, जैसे हम लोग करते हैं और हमें भी सिखाया जाता है. तो उसी अप्रोच से ये बना है. तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि काफ़ी और प्रोग्रेस होने वाली है इसमें. और क्या ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाएगा? शायद, बट हमारा काम आसान ज़रूर कर पाएगा और काम जल्दी ज़रूर कर पाएगा, ये तो है. Okay, thank you, Ankit sir. I would also like to hear the thoughts of Akhil sir. Akhil sir, can you share your thoughts about Devin? Akhil sir, are you there? Hi,
Ayush, Akhil sir is actually traveling, so he might not be Okay, available. so in my list there is Rohit sir as well. So Rohit sir, we would like to hear your thoughts as well. Rohit sir, are you there? यस यस नहीं है, वही कॉल पे ही है. Okay, so please share your thoughts about Devin. यार हम चैट जीपीटी से बाहर नहीं निकले, डेविन के बारे में क्या बताएं. So that's all from your end. हाँ मतलब मेरा कोई ऐसा वो नहीं है यार इस पे. मैंने एक्चुअली उसके बारे में ज़्यादा कभी मैंने सुना भी शायद तुमसे ही है पहली बार इसका. वो न्यूज़ पे भी मैंने कुछ फॉलो नहीं किया है, तो मेरा कोई इस Okay. पे ऐसा वो नहीं है ओपिनियन कोई अभी. Okay. Anyone else would like to share their thoughts about Devin? Otherwise, we okay. Manoj sir, please. हाँ जी. एक्चुअली मैंने डेमो देखा था इसका. तो केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं, टेस्टर और प्रोडक्ट इवेंजलिस्ट इनको भी रिप्लेस कर सकता है. बट अगर आप प्रतिभावान हो तो आप रिप्लेस नहीं हो सकते. आप तो उसमें कुछ और कर लोगे. तो मेरा यही थॉट है. ऑब्वियसली ये कुछ हद तक तो इम्पैक्ट डालेगा, बट इतना नहीं डालेगा. That's Okay. थैंक यू मनोज सर. अखिल सर, आपका नेटवर्क इशू था. एक बार आप फिर से ट्राई कर सकते हो अगर मतलब कुछ आप बोलना चाहो तो. I'm audible now. Yeah, right now you are audible. Okay, so I was saying that how Manoj was saying and how Ankit pointed out, it will make life easier away from these things actually impacting the overall market right now. It has made things easier for developers because they are able to do things pretty quickly. But I think these tools lack the overall context. So I think that is where the human intervention comes into picture, and that is where I think we are still relevant in terms of using these tools. So I think how much knowledge you have and how effectively you can use these tools will actually decide how far we are going to take these tools. So I think it will impact, but I think we are far away from that situation right now. Maybe 5-10 years down the line, but I think right now Okay, thank you, Akhil sir. Well said. Let me share my screen again. Okay. Uh, so today the first point will be coming gaming in Flutter. It will be part one. The part two will come in next Flutter next. So first of all, Flutter. Let's read about Flutter. Flutter is a Google's portable UI framework for building beautiful multi-platforms application and games. And what Flutter did today, Flutter is used in more than 1 million apps, ranging from early stage startups to large companies like ByteDance, Tencent, BMW, and of course Google, right? And to deliver beautiful performant and portable experience across platforms from a single code base. So the best part of Flutter is it is multi-platform from a single code base. Basically, as per my knowledge, 90 to 95% of code base will be remains same. Either it is Android, or it is iOS, or it is web. Flutter for games. Over the past few years, tens of thousands of games have been published using Flutter, from simple puzzles to more complex arcade games. Some of our favorite include Lotum's 4 Picks Word, the popular word guess game, the retro pinball game we built in Flutter for IO, and PUBG Mobile.
who use Flutter in their social and menu screens where a 3D game engine is not needed. So basically, it all are 2D games. PUBG में भी इन्होंने केवल सोशल और मेन्यू स्क्रीन्स के लिए फ्लटर यूज किया था, और बाकी ये जो लो टर्म्स 4 पिक 1 वर्ड गेम है ये कंप्लीटली फ्लटर में बना हुआ है. एंड that's why today we are here to talk about how we are investing in making game development in Flutter faster and easier. So why Flutter can be a great choice for game developers. Let's uh, discuss about it. I would like to again involve Manoj sir. We have lots of talk about Flutter. Every Flutter Nest we talk about Flutter. Why Flutter can be a best option for developing apps. So I would like to invite Manoj sir to tell their point of view why Flutter could be a great option for developing an app. So Manoj sir, can you tell something about that? ये जानने के लिए तो हम यहाँ आए हैं ना, ये तो तुम बताओगे. Manu sir, we have talked about Flutter for lots of time. So I guess कुछ तो मतलब नॉलेज हमने शेयर किया ही है आप लोगों के बीच में, जो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हो फिर से. यार मुझे जो लगता है वो इसलिए ग्रेट चॉइस हो सकता है क्योंकि एक ऐप बनाने के लिए हमें iOS और एंड्रॉयड दोनों में कोडिंग नहीं करनी होती. एक में कर दोगे तो सेम चीज यूज हो जाती है, तो वो ज्यादा मतलब सही लगता है मुझे. तो मेरे हिसाब से तो वही है, सिंगल कोड बेस है. और Okay. Okay, thank you. Shikhar Jain is raising his hand. Please Shikhar. आयुष एक क्वेश्चन है, अभी गेम किस में बन रहा है? ये मैंने बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं किया, बट फ्लटर पे जो बन रहा है उसके बारे में यहाँ पे जरूर है. पॉइंट इज कि गेम्स जो हमारे बनते हैं दे आर मेंट टू बी रिस्पॉन्सिव कोड बेस के कारण से गेम डेवलपर्स चूज करते हैं C++ या फिर C#. ओके. तो मेरे को नहीं लगता है कि फ्लटर में गेम्स बनाना फीजिबल है इतना अच्छा. बट अकॉर्डिंग टू स्टडी कुछ गेम्स बने हुए हैं जो हम आगे अपने पीपीटी में दिखाएंगे भी, जरूर बन सकते हैं, बहुत फिजिबल है. या आपके बेसिक लेवल गेम जरूर बन सकते हैं, बट आपके हाई लेवल गेम्स जो आपके ग्राफिक इंटेंसिव होते हैं वो सब नहीं बन पाएंगे. डेफिनेटली, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन किया कि जो 3D गेम्स हैं वो बेसिकली फ्लटर उसमें फिजिबल नहीं है, बट 2D गेम्स के लिए फ्लटर कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन, वो इसलिए मैंने पहले मेंशन किया. Okay. Okay, thank you, Shikhar. Let's move forward. So first of all, we could say open source. Flutter is completely free and open source, giving you a fine-grained control over your game's rendering and input handling, allow you to debug issues at their core and customize the engine to your needs. After that, multi-platforms, as Manoj sir said, Flutter supports multi-platform game development, so you can build your game for iOS, Android web and desktop, all from one single shared code base. जो कि मैंने पहले भी बताया कि 90 to 95% कोड बेस सेम होता है. Spend less time worrying about garbage collection and more time focused on retention, providing us the same look and feel across all the platforms. Performance के बेस्ड पे finally Flutter games loads fast and generally very performant, even on low end device or in browsers. Bundle size can be smaller because the Flutter engine only adds a few megabytes to your games. So Flutter games provides a smooth and efficient gaming experience. After that, Flutter for games, let's discuss about it. And while those are compelling reasons to use Flutter for games development, we know that developers require even more support and resources, which is why we are excited to introduce the Flutter Casual Games Toolkit. Flutter Casual Games Toolkit के बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखना. A collection of tools, templates, and resources to make game developers more productive with Flutter. तो अगर अभी के लिए ओवरव्यू
लेना चाहें फ्लटर कैजुअल गेम्स टूल किट का, तो कुछ ये एक टूल किट है जो हमें गेम को डेवलप करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, जिससे गेम्स इजिली डेवलप हम कर सकते हैं. So what's in the Flutter casual game toolkits? Let's discuss about the game toolkit. Flutter for games, first of all, basic game UI, audio integration, camera. Basic game UI like widget templates जो हैं, audio integration, audio games में जो जितनी भी audios use होती हैं वो हमें provide होती है इस toolkit में. Camera if needed, किसी game में अगर camera needed है तो वो भी हमें provide होता है. जैसे कुछ लूडो गेम्स में आई हैव सीन कि उसमें कैमरा यूज होता है, तो दैट कुड बी यूज. फ्लटर फॉर गेम्स में आगे है गेम लूप, कोलिजन डिटेक्शन, एनिमेशन. गेम लूपिंग लाइक एंडलेस रनिंग जो होती है वो हमें प्रोवाइड होती है कि लूप में कोई चीज चल रही है. कोलिजन डिटेक्शन भी हमें प्रोवाइड होती है, जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिस इमेज में कि ये बर्ड जंप करती हुई जा रही है, अगर ये किसी से टकराती है नीचे गिरती है तो उसके डिटेक्शन के लिए भी हमें ये चीज मिलती है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एनिमेशन जो आपको दिख रहा है वो हमें उस टूल किट में मिल जाता है. So after that, introduction to Flame Flutter package. It will be shown by Gaurav Kamboj. Over to you, Gaurav. Thank you, Ayush. Is my screen visible? Yes, Gaurav. Okay. Just a second. Okay, so now we'll be talking about the introduction to Flame Flutter package. So what is Flame? Flame is an open source game engine designed specifically for Flutter, a popular UI toolkit for building natively compiled applications for mobile, web, and desktop, obviously from the single code base because we are working with this in Flutter. So talking about its like likes and popularity on PubDev, it's like 1,816 likes, per points are 130, and popularities of 98%. So currently this package is at version 1.16.0, and this was updated like 33 days ago. And this package of Flame like toolkit has been sponsored by PowerStack. So if we talk about the features, like हम Flame का use कर रहे हैं Flutter में gaming के लिए, तो what are the features that Flame provides us? The goal of Flame engine is to provide a complete set of out-of-the-way solution for common problems that game developed with Flutter might share. Like developing applications and developing games, there's a lot of difference. Common applications में we need not to have that kind of animations, उस चीज़ें की उस kind of requirement हमें नहीं होती while we are working on simple applications. But when it comes to gaming, तो it can be like considered as a separate domain, completely separate domain. So when we have to use Flutter, Flame is there to help us to it provides us various features like a game loop. We all have played games like Temple Run, Subway Surfers, where we have a complete loop, like it's endless running, right? So it provides features like a game loop, components, object systems, effects and particles, collision detection. Then we have gestures and inputs. When user is interacting with our character or with our game, तो उस टाइम पे वो उन चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं. Then obviously the images, animations, sprites and sprite sheets. So without animations, I believe no game can be a good user interface because it's all about animations, good sounds, and smooth experience. तो दिस इज वेयर फ्लेम कम्स इनटू प्ले. ये फ्लेम पैकेज से हमें इतनी सारी चीजें इनबिल्ट मिल जाती हैं which makes our life easier. Then we have general utilities to make development easier.
So we'll have a like I've written a small code snippet like how Flame is making life easier. Uh, Suppose I'm creating a game. So first thing would be like creating a character. For that, this Flame engine provides us a class that is sprite component. We'll simply extend our character with sprite component, and it allows us to override few methods like onload, where we have passed just our illustration that is dash.png, and we can load our character. Then we have another function that we can override is update. तो इन दिस केस लाइक हमारा कैरेक्टर कब अपडेट हो रहा है, कब जंप हो रहा है, वी कैन ट्रैक ऑल दोज थिंग्स एंड इट रिटर्न लाइक गिव्स अस अ डबल वैल्यू विच इज कि लास्ट किस टाइम पीरियड पे हमारा कैरेक्टर अपडेट हुआ था. सो लाइक इन दिस सिंपल वेज हमारा एक कैरेक्टर उसमें क्रिएट हो सकता है. देन कमिंग नेक्स्ट लाइक लोडिंग एंड अपडेटिंग कैरेक्टर. अब हमारा गेम का कैरेक्टर इज रेडी विद अस, वी आर रेडी टू जस्ट लाइक अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि उसे लाइक गेम में चलाना, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, एवरीथिंग. फॉर दैट वी हैव अगेन फंक्शन दैट इज ऑन लोड, वेयर वी हैव हमारे पास ऑलरेडी हमारा माई कैरेक्टर था, वी कैन सिंपली ऐड इट एंड देन इन अपडेट मेथड ये एंडलेसली रन कैसे कर रहा है, कब जंपिंग कर रहा है एंड कब उससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है. तो दोज एवरीथिंग्स कैन बी कवर्ड विद इन दीज फंक्शंस. इफ वी आर नॉट यूजिंग फ्लेम, तो ये सिंपल जो 4 लाइन का कोड हमें यहाँ मिल रहा है, फॉर दैट वी मे नीड टू राइट हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बिकॉज वो चीजें फ्लेम प्रोवाइड्स अस. There is a lot more that we can explore about games in Flutter because it's a separate domain. There is a lot to discuss. बहुत सारी चीजें हैं which cannot be covered in a couple, even in 1 or 2 presentations. So we'll be talking about that in future. But before that, we can have a look what else can be added in Flutter gaming apps. So what more can be added? First of all is like leaderboard. For that, like मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, मैं एंड आई एम अचीविंग लेवल्स, मैं लेवल्स को अपने लेवल्स इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आई हैव अ लीडर बोर्ड वेयर माई रैंक्स गेट इंक्रीज्ड. सो इट्स अ काइंड ऑफ फोर क्रक्स कि मैं किसी गेम में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड उसमें मेरी रैंकिंग इंक्रीज हो रही है, मैं लीडर बोर्ड पे ऊपर जा रहा हूँ. सो दैट इज व्हाट should be added in every game. Achievements again, like if we talk about games like BGMI or PUBG Mobile, after certain levels हमें नई नई achievements मिलती हैं where we can unlock skins, different skins for our जो भी उसमें guns होती है उनके लिए और everything. And then authentication, obviously if we are working on gaming and applications, so authentication can be done with different methods that usually is done in all applications. And then we have monetization. We already talked about this in our last presentation, where we can like add उसमें हम ads लगा सकते हैं for revenue point of view. Then another thing we can add is like in-app purchase. कुछ games होती हैं जिनमें लाइक हम कुछ इन ऐप परचेज उन्हें दे सकते हैं कि इफ दे वांट टू बाय समथिंग और उन्हें कुछ कॉइन्स बाय करने हैं तो दे कैन सिंपली बाय इट फ्रॉम आवर ऐप इटसेल्फ. एंड so conclusion, in conclusion, Flutter provides an accessible, versatile platform for creating gaming apps with its user-friendly interface and extensive support for animations and interactions. Developers can easily craft engaging and immersive gaming experiences, whether you are a beginner or an experienced developer. Flutter offers the tools and resources needed to bring your gaming ideas to life, making it ideal choice for building fun and interactive games for various audiences. So basically, conclusively, we can say that Flutter can be a good option, but only if it's limited to like 2D games or normal casual games. If we talk about high graphic games or 3D games, for that we may need some other things that is not feasible with Flutter at all. And but if we are talking about like normal games, creating card games or runner games, so using Flutter, that can be quite easy, and it provides good performance and multi-platform is there. So that's all. So Flutter can be a good option. We'll be continuing this series in the next part where we'll be talking in detail about uh, gaming in Flutter. So for now, thank you. And this is our team. They all have contributed for this presentation.